solve your health issues. Okay. Can you tell me how many of you are here for professional reasons, like you want to upgrade professional? Can you say just write P in the chat box? How many of you here to upgrade professionally? Write P in the chat box. Sandeep ji, okay. And Padma ji, okay. Sadhika ji, perfect. Okay. Now, how many of you want to do it for personal reason? Personal reason, say R, write R at the chat box. For personal reason, personal health issues. What? Nobody R? There is no R here. Okay. Okay. Now, how many of you think that this would really make a difference? Okay. How many of you can really think difference? Just तो आप लोग थोड़ा इस पे थोड़ा everybody has to make some effort. Okay. I have recently come across one book. Finally, I found a book which is providing the just giving the knowledge of the Siddha system in Marma. Okay, but still that book do not have the protocols. The protocols which are related to ERA and Pinglanari rectification. Okay, so still this knowledge which I have given you. Okay, still it is very unique. It's still not out there with me. तो आपके पास बहुत सारी चीजें already, I have already equipped you with a lot which you can do wonder. तो आप लोग एक तो बात पहली चीज आप देखो, when you are a healer, you cannot think like a patient anymore. Sometimes you have to make it a little difference because when you see when my teacher was teaching us, I have never asked few things like nobody in the group asked, sir, it's like how many days it will take to rectify a particular problem. Okay, how many days it will take. Okay, whether it will work or not. Give us the particular protocol for something. Because we have given you already so much. अगर आपने इसमें उसमें से अभी आपने 10% भी आपने मतलब मास्टरी कर लिया आपने तो it is a lot. Okay, even 10% if you can master out of whatever that was given. So don't ask for more because if you know more, then you want to know more and that whatever you have that will have no meaning to you at all. So people I see in the group keep they asking for, sir, give us more protocols for these, that, and this, that. But and it happens like personally also, people keep texting me, sir, please check this what is called report and tell me what I should do. And then I'll ask like whether you have really gone through the videos and the classes I have taught you. Okay, this is so easy. Just rectify the value and the knowledge. That's it. You do not need to think that much at all. Up to just remember and just go for it. Work on your own energy level. You do not need to think too much. And when you get some results, when you get some results and when you meet more and more complicated cases, then the real problem will arise. The problem is not at all how many days. Today also somebody asked me, that person had asthma and she's been treating herself for almost 10 years. And I know that the acupuncture is very helpful in treating asthma. And the first question, sir, how many days will it take? Okay, first question. So one thing I told her, like, no, the
it is not the question that how many days it will take. The question is, can I heal you first without the medicine? Okay, without the medicine, because medicine is not the cure. Medicine is a temporary relief. The cure is not the medicine at all. So आपको जो मेडिसिन लेस ट्रीटमेंट्स है उन पे ज्यादा भरोसा करना सीखना चाहिए अभी से. Okay, you have to start working on them and think of more better questions like how can this really happen. अगर नहीं हो रहा है, if this is not happening, what should I really do to make it happen? Okay, then diagnose, like am I diagnosed, creating the proper diagnosis or not. Okay, be 100% sure if this is the right diagnosis. Okay, this person have 100% the Ira-Nari imbalance. This person have the 100% Pingla-Nari imbalance. That surety is very, very important. That will give you the boost or clarity, what should I do next. Now, you will keep thinking after that, oh, now if I know this, okay. Now, tell me one thing. If somebody had swelling over the whole body, swelling, okay, सूजन आ जाना, सूजन ये तो बहुत कॉमन. सूजन आना, ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, रेक्टिफिकेशन इज नीडेड. सूजन साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है. सारिका जी आपका वॉइस. साथ में क्या है? साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है. पिंगला नाड़ी. Why? क्योंकि पिंगला नाड़ी में पित्ता बढ़ जाता है और उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. कॉन्स्टिपेशन से वो वाटर रिटेंशन होगी बॉडी में और फिर वो स्वेलिंग आएगी बॉडी में. No. Wrong. सूजन. Pingolanari excessive young. No. It is not excessive young. सूजन होना, सूजन, ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग होना. भारी पर happiness is associated with in-energy. Happiness is associated when there is a happiness, it is in. Okay, if that person is getting lighter, if that person is getting lighter, ठीक है, बॉडी में ज्यादा हीट है तो जो भी है that is shrinking. Okay, so lightness is associated with young energy. So Sujan, edema, okay, it is a clear case of high in energy. ठीक है. जो भी लोग, the people who are little overweight, you see they are apana vayu, the stomach is not clear all the time. Okay, they will gain weight. Okay, the food is not digested well. At the beginning, it starts with Ira. So Ira Nadi imbalance will create this problem, the gas, indigestion, acidity. Okay, and when it is go to a very high extent, when the food is undigested in your stomach for a very, very long time, then the heat will start creating. Okay, the heat. See, all the diabetic people, okay, diabetes, you will see this is mostly happens with whom? People who are generally overweight. Okay, and then they will suddenly, after some time, they will suddenly start to lose weight and they will become very, very thin. This is happening or not? Yes, sir. Yes. So initially start with Ira imbalance and then it will go to Pingla imbalance, right? तो आप ये चीज को देखोगे कि वो दोनों हो सकता है. इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ बट इट विल चेंज टू लेटर पिंगला. तो ये सारे आपको इन और यांग का पहले आप एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना दो. ठीक है, व्हिच इज यिन, व्हिच इज यांग. Sir, I have been observing, sir, my left, like Ida Nadi is very active throughout the day. Yeah. But I have symptoms of acidity, that kind of. So yes, it is this starting when you have in energy. मतलब ये देखो, आपका जो स्टमक है और आपका जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, it is very different. The acid in your stomach is very strong. ठीक है,
So it can even बोलते ना कि like even an iron rod, if we can just put it, it will also burn that strong acid it is. Okay, so in the beginning you have the urinary which is imbalanced, overactive. Okay, the food is not digesting well. Okay, then you feel the acidity, and after some time you will see that stomach will get very heated. Okay, and then you will have a lot of problem which is related to stomach. This is very common. This is your, and see, it is very simple. You start working out, do heavy Surya Namaskar, or whenever I see this, I used to go for boxing classes. Okay, I used to go for I do a lot of yoga. So whenever I am doing very heavy workout, my pingla will get active. So exercise is very, people who are not doing exercise, any kind of exercise, their ira will be always active. And the people who are overly, the pingla is active, they should do calming or very gentle yoga flow, not like a very heavy yoga flow again. तो इसके बेसिस पे भी आप उनको डिफरेंसेस करके दे सकते हो which kind of yoga will suit to them. ठीक है, तो यिन एंड यांग का जो डिफरेंस है वो आपके मन में एकदम बहुत क्लियर हो जाना चाहिए. There is no exception. मतलब this is the foundation or this is the starting point of your treating others. Sir, can you Sir, please I have ask everyone to put off the audios? Like Yeah, there's this noise Yeah, it coming on. happens. It is Yeah. a lot. Okay, now sir, just raise your hand before raise your hand means there is a raise hand sign. Raise hand sign in the raise hand sign. See, raise hand. You can see in my thing. Okay, so if you get that, सर जी आप देखिए एक रेज हैंड का साइन आता है आपके लोअर इसमें, वो ऑन कर देना तो In जिसके reactions, it's in reaction. तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे और दे कैन स्पीक. ओके, सारिका जी, यू वांट टू आस्क समथिंग नाउ? हाँ बताइए, उसके बाद If it's IBS, irritable bowel syndrome, जिसमें लूज मोशन हो जाते हैं, हाँ तो वो क्या है फिर? क्योंकि अब बताइए, उसमें तो एक्सेसिव वो अपान हीट जो वायु, है बॉडी में, एक्सेसिव अपान वायु, हाँ लूज मोशन, हाँ अपान ex- वायु है डिस्टर्बेंस, बट हाँ. वो पिंगला है क्योंकि वो हीट हो जाती है बॉडी में, जिससे लूज मोशन हो जाते हैं, दोनों हो सकता है, पित्ता बढ़ जाता है. दोनों दोनों आप चेक कर सकते हैं, उसमें सिम्टम्स आप चेक करके देखिए. ठीक है, आप दोनों चेक करके देख सकते हो. आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट हियर. ओके, नेक्स्ट दीपक जी. अच्छा सर, ये वीवो किसने लगा? आपका नाम बताइए, आपका नाम तो मुझे पता नहीं. मेरा अरिंदम भट्टाचार्य. अरिंदम भट्टाचार्य. हाँ हाँ ठीक है, बताइए. हाँ बताइए, अरिंदम आप बताइए भट्टाचार्य. पहले, आप काफी देर से बताइए, आप बताइए. हाँ, मेरा आंखों का प्रॉब्लम है, वो है ग्लूकोमा. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लूकोमा? हाँ, but others, come on, like let's discuss this. कौन बताएगा इसका? Which नाड़ी, which पिंगला वायु? नाड़ी, पिंगला नाड़ी and उदान वायु. Udana Bayu is perfect. We have any problem with our senses, Udana Bayu. Okay, Pingla or Ira, we have to see based on the personality. Okay, we have to again ask questions and we have to find out. Arindanji, looking at you, like first Yeah. impression, obviously I can feel it. Maybe your Pingla is overactive. Looking at you, okay. No, Looking at somebody. मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल हाँ. मैक्सिमम टाइम खुला रहता है. यही बात है, फर्स्ट इंप्रेशन, देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, हम देख के बता सकते हैं बट कभी कभी पूछना भी पड़ता है. तो आप थोड़ा देखिए और क्या क्या इश्यूज है आपको, और भी कुछ इश्यूज है आपको? मेनली ईरा नाड़ी हमेशा खुला रहता है. हमेशा आपका हाथ और पैर ठंडा रहता है कि गर्म रहता है? गर्म रहता है. गर्म रहता है. ठीक है, तो आपको ईरा, मतलब अगर गर्म है तो आपको ईरा नाड़ी की इशू नहीं है. ठीक है, तो आपको पिंगला से आपका ईरा नाड़ी ओवर एक्टिव है बोल रहे ना? हाँ, हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल खुला रहता है. तो आपका अगर ईरा नाड़ी हमेशा अगर एक्टिव रहता है तो आपका हाथ ठंडा होना चाहिए. ठीक है, ठंडा नहीं है मेरा हाथ. तो आप थोड़ा इसमें थोड़ा और चेक कीजिए. ओके,
क्योंकि ये चेंज होने, आप जब चेक कर रहे हैं क्या तभी वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो आपको कम से कम 10 बार दिन में चेक करना है, तब आपको 100% भी श्योर होना पड़ेगा। आपको गैस एसिडिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत छोटे में जब था उस टाइम प्रॉब्लम था, बाद में कभी नहीं हुआ। बीपी? कुछ भी नहीं है मेरा, ओनली और कुछ भी ग्लूकोमा। नहीं है? ओके। वो भी जेनेटिक है, वो भी जेनेटिक है। जेनेटिक है, वो ठीक है, ठीक है। तो आप थोड़ा इस पे हम चेक करके देखेंगे, ठीक है। आपके पल्स को भी चेक करेंगे, खाना पीना देखेंगे, तो सब कुछ थोड़ा चेक करके हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी सारा कुछ बताने के बाद भी जो सिम्टम्स अभी बता रहे हैं, दिस इज टू डिफरेंट थिंग। वन थिंग इज सेइंग कि उनका ईरा हमेशा ज्यादा एक्टिव रहता है। जो अगर ईरा एक्टिव है तो उनका हाथ ठंडा होना चाहिए, ठीक है। अगर पिंगला एक्टिव ज्यादा होता है तो उनका जैसे हाथ हमेशा गर्म रहना चाहिए, ओवर लाइक स्वेटिंग, ऑलमोस्ट लाइक स्वेटी हैंड्स, ठीक है। तो ये इसमें स्वेटिंग थोड़ा हैंड है, स्वेटिंग हैंड है, फिर भी गर्म रहता है हाथ। ठीक है। तो हम अभी अगर इसमें क्लियरिटी हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द उदाना बायो रेक्टिफिकेशन एंड देन गो फॉर द लोकल पॉइंट्स, ओके ओके एंड देन वी विल गो फॉर द लोकल पॉइंट्स। ओके, अच्छा, थैंक यू। और एक बताइए अभी और केस, चेस्ट में इस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है, कुछ बायो टू बी रेक्टिफाइड। प्राणवायु, 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 वेरी गुड। मिड बैक, दिस रीजन मिड बैक में पेन है, कुछ बायो should be rectified। प्राणवायु, प्राणवायु होगी। प्राणवायु, ओके। संदीप जी, आपके कुछ क्वेश्चन है अभी? अरिंदम जी, आप प्लीज आपका ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, हाँ, मुझे ऑटिज्म या ऐसा कोई स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं ना, उनके बारे में पूछना था। हाउ डू वी सुषुम्ना नाड़ी डायग्नोज? रेक्टिफिकेशन, सुषुम्ना नाड़ी रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इस पे और आपको मास्टरी करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा बात अगर करता है। बिल्कुल सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल, आई वुड लाइक टू, हाँ। एंड इवन आई वुड लाइक टू visit you and learn from you by assisting you. अरे ऐसा मतलब ऐसा मत बोलिए, मतलब आई एम वेरी वेरी यंग एंड वेरी, मतलब क्या बोले आप तो। That's fine. हाँ, Young, तो अभी ये तो हमें कोई मतलब इतना कुछ आप मत सोचिए। अभी ऐसा दिन आ जाएगा कि फिर आपके पास मुझे जाना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी। तो आप ऐसा मत सोचिए। तो आप मतलब जितना हमें सी, आप फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव बीन टेलिंग यू, इट इज वी आर लाइक मोरल ऑफ ए हीलर्स, वी आर स्टिल नॉट रीच टू द स्टेज ऑफ अ गुरु, ओके। तो गुरु एक बहुत ही अलग स्पेस में जाता है, ठीक है। तो आप लोग शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मतलब बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन के साथ मैंने सारा कुछ आप लोगों को दे दिया है, तो अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करोगे कुछ चीज खुद ब खुद, because it will come to your mind the moment you start practicing, it will come to your mind, okay? अगर सब कुछ मैंने बता दिया तो आप सोचोगे नहीं, you will not use your right, brain also। right. But Okay। need your guidance if we are right or wrong, नहीं, like that. हाँ, तो वो तो है ही, मतलब it is like not like a guidance, it is always it will always be a discussion format, okay, not like a Right, right. guidance। हाँ, True, true, true. And in autism, as you said, Sushumna Nadi, and along with that, these brain points like Brahma Marma and हाँ, yes। would हमने be पहले would पहले इस पे काम किया था, जो सीमांत मर्मा है, सीमांत मर्मा के बारे में हमने दिखाया था। सीमांत मर्मा right, विल बी हेल्पफुल, ठीक है। तो ब्रह्म वर्मा के बारे में हमने दिखाया था कि जो साइड में जो है पॉइंट्स, दैट आल्सो नीड्स टू बी एक्टिवेटेड, ओके। तो दिस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। बट आप देखो, जिसका व्हेन यू आर डूइंग हीलिंग ऑन अदर्स, यू टेक सम पार्ट ऑफ देम, ओके। सो you will become very sure that your energies are in perfect sync. Second thing, especially approaching this kind of patients, okay, don't think about the monetary part in the beginning at all, okay, because these are sorry, very different. sorry, which part you said? Don't think about in the The beginning. monetary part, the financial part, and if you're healing somebody, just what I'm saying, Right. okay, in the initial days,
because these are very special cases and we need to give them special treatment and a special way to, you have to be at the highest of your mental space to give and approach that kind of a healing purpose. Okay, so आपको ये करना है, but with full precaution, fully mentally you have to be at like like you're doing something, trying to do something good. Okay. Okay, so let's learn a very basic foundational practice which you want to do before we start the practice. Okay, this you note down everything which you are doing, and then you have to make sure that you come back and if you forget, okay, if you forget, you again recap and do this again and again. This sequence which I'm going to tell you, never forget it, do it as it is, and then if you miss something, it is okay. Okay, with practice you will feel the less need of to do too many things, but in the beginning, at least for 5-6 months, try to do everything whichever in the sequence. Okay, so first thing which I have to all of you have to do before you start the practice, burn a ghee lamp. Write it down, ghee lamp in that particular space. Okay, so this is called as a shakshi. Okay, the fire is one of the best shakshi, the witness to your healing practice. Okay, obviously you have to make sure that you have taken the bath and you're in a very good space with your own thing. You have cleaned the aura, cleaned the I have taken the bath properly with salt water before. These are ideal cases for start. Then put chandan on the person's Marma, on the Talhriday Marma, and on the kidney 1 point. और even at the Viruti Kalam, आप पैर में कहीं पे भी लगा दो, it will work. Then we will make sit. Okay, make the person sit and not lie down immediately. We just make that person sit in front of us, whether cross-fit or the legs are open or falling down. Okay, sitting in the chair, or if you're doing it on the ground with a mat, just sit. Ask them to sit cross-legged. If they are not able to sit cross-legged, just make them comfortable, whatever the possibility. Okay. So this is like the first thing when we are start to interact with the person. Okay, and then we will put the chandan on there, this 4 and 5 points. Okay, then we have to do a simple gesture of namaskara. Okay, and start to visualize for a few seconds that our navel is getting connected to their navel. Throw a white cord, visualization that your navel is connected to their navel through a white cord, which we have to cut, visualize to cut at the end of the practice. This is hardly 30 seconds of visualization. Fine? Everybody fine? Shall we move? Yeah. Someone is सर asking आपने to जो अभी बता दिया है वो थोड़ा हिंदी में समझा दो ना. हाँ ठीक है. हिंदी में कौन से which part जो आपको थोड़ा लास्ट difficult पार्ट लगता है? बता दिया है ना आपने विजुअलाइजेशन के बारे में करने का. बताया ना सर. देखिए visualization
में ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो विजुलाइज करने के लिए आपको देखो, विजुलाइजेशन इज नॉट थिंकिंग, एक बात याद रखना, विजुलाइजेशन इज नॉट थिंकिंग एट ऑल। विजुलाइजेशन में आपको 5 सेंसेस को लगा, यूज योर 5 सेंसेस टू ड्रॉ ए पिक्चर इन योर माइंड। व्हेन यू यूज ऑल योर 5 सेंसेस टू विजुलाइज समथिंग, ओके, देन इट बिकम्स एक्चुअली, मतलब वो एक सही मायने में वो विजुलाइजेशन होता है, ठीक है। तो 5 सेंसेस को यूज करना मतलब क्या, अगर आप सोच रहे हो कि like you're sitting in Himalayas and you're meditating, just for a understanding, okay, then just sit and visualize that you are sitting on a, no, in Himalayas and you are meditating. Try to feel that environment, like how it will make you feel if you're really sitting on that particular Himalayan region, how that cold will touch your skin, what kind of smell it will come to your nose, okay, what kind of मतलब आप क्या देखोगे वहां पे, the snow, okay, the jungles. Try to visualize that on your through your mind's eye, okay. So if the air is coming to your mouth, can you feel some taste of it like this? ये इस तरह से आपको visualize करना। When you put all your 5 senses in your visualization, the visualization becomes very perfect. Then you can actually make your, even you can do wonder, like just by visualizing you can do wonder. You can sit in like in fire and visualizing that you are actually you are going through a cold. We have seen this video in YouTube where few monks in the cold Himalayan regions, okay, in very cold, and they have given towels which are wrapped with a lot of water, and they kept it on their body. Just think about how cold it can be, and in some time that towels were getting dry, and that steam was coming out of the towels. ठीक है, आप विजुलाइज करके अपने बॉडी में इतना गर्मी पैदा कर सकते हो कि वो टॉवल इन दैट कोल्ड रीजन भी गर्म होके वो सूख जाए। तो आपका बॉडी का पावर इतना है, तो वो विजुलाइज करना आपको आना चाहिए। तो आप जब विजुलाइज करोगे कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड माय नेवल इज कनेक्टेड टू देयर नेवल, मतलब मेरा जो नाभि है उनके नाभि से कनेक्ट हो रहा है एक कॉर्ड से, व्हाइट कलर का कॉर्ड कनेक्ट हो रहा है, दोनों का नेवल, ठीक है, एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। तो ये कनेक्शन जब बिल्ड होगा, ठीक है, एंड रियल सेंस में ये जो होने लगेगा, तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलने लगेगा। तो आपका जो रियल इंटेंशन है, जो हीलिंग का इंटेंशन है, वो उनके अंदर बहुत अच्छे से जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये विजुलाइज आप बिना सोचे, मतलब सोचना एक बात है और विजुलाइज करना एक बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। और इसको आपको मास्टर करना बहुत जरूरी है कि आप विजुलाइज, देखो जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, दे ऑल नो द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। सारे लोगों को पता है। आस्क अबाउट, टेक एनीवन फ्रॉम स्टीव जॉब्स टू एनीवन, everybody have practiced visualization in their life, okay. Without perfecting the visualization, you cannot come into the world of spiritual healing or spiritual practices. तो आपको ये चीज को मास्टर करना आपको आना चाहिए। तो ये आप अपने मतलब एजेंडास पे लिख के रखो कि आई हैव टू मास्टर दिस, आई हैव टू go through and read and practice and try to find everything which is possible to visualize, to master that this aspect, if I want to spiritually grow, okay, have more control over my life. I'll give you a simple example. Like if you have never gone to gym, okay, or any kind of practice where you're gonna physically gonna got hurt, okay, आप जब जिम के बारे में सोचते हो, योगा के बारे में सोचते हो, तो आपको सबसे पहला मन में वो चीज जो आता है आपके मन में, वो है कि यार आज तो फिर से जाके I have to hurt myself, I have to hurt myself so that I become, तो वो हर्ट होने का जो थिंकिंग है, ठीक है, that stops you from going to the gym on a regular basis, ठीक है। अब जब
सोचते हो कि आपको बॉक्सिंग क्लास जाना है और आप सोचोगे 10 घुसा पड़ेगा आपके मुंह में, तो वो फियर है ना, वो फियर आपको जाने से रोक देता है। ठीक है, तो आप जस्ट हाफ एन आवर पहले आप जस्ट विजुअलाइज करना शुरू करो कि हाउ गुड एक्चुअली इट फील्स टू लिफ्ट अ हैवी वेट or do the Surya Namaskar for 108 rounds. Just visualize in your mind that I'm doing and I'm doing. How it feel good. I'm becoming stronger. You will see, you will not feel like not going the class anymore again. Okay? तो आपका जो माइंड है वो हमेशा आपको कोई भी डिफिकल्ट चीज करने के लिए रोकता है। ये बात आप लिख लीजिए। कोई भी चीज आप नया करोगे, कोई भी चीज, एनीथिंग विच यू डू फॉर new, anything new, there is no surety. Are you guys there with me? Network is gone, looks like. Hello, guys, are you guys there with me? Hello. डिस्कनेक्ट हो गए। Are you guys there with me? Yes, यस yes. सर। हाँ, तो आप लोग इसी चीज के लिए आपको विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि आप योर माइंड विल ऑलवेज स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स which is where there is no surety, because mind want comfort, because the mind do not like any threat. Okay, and that threat can come from even doing something which is good for you. Okay, the mind doesn't know that going to gym will make you stronger, or maybe taking a cold shower will make you stronger. It will only make you feel okay that this is going to be painful, and it will stop you from doing everything. It will put you thoughts in your mind which will stop you from doing anything. Okay, you know that doing any kind of spiritual practice is good, but your mind will keep telling you, don't do it, this is no meaning, this is useless, and then so many stuff. It will put so many thoughts, you will go mad, and start observing what your mind is telling to stop you from all these things. That is why the visualization is very, very important. Okay, there are very less people I have seen that they do not visualize and they still have done wonders in their life. Very less. Okay, so now we have come to the point. We first step, putting the chandan. Okay, then doing namaskar, and then what do you have to do? Visualize. Okay, then next thing is tapping on your Tal Hriday. Tapping with 2 fingers on Tal Hriday Marma. Because you are activating your now palms energy, because you are weaving the healing with your palms. Okay, so start. It is activating your heart. Okay, because you need good thoughts, good healing power. So it is activating your heart as well as activating the power of your palm as well. Tapping on your palm for 30 seconds on the Tal Hriday Marma with 2 fingers. Next is to squeeze your fingers. Next step. Squeeze your fingers. Just one or two times enough. Done. Everybody is writing it down. Next, you have to keep the palms wide open in front of your chest, like wide open. And again, visualize that you are receiving a cosmic energy on your Tal Hriday Marma. Okay, receiving a cosmic energy on your Tal Hriday Marma, which you are going to make you feel good and make you give you the healing energy to heal somebody. Visualize to receive the cosmic energy for healing purpose. Okay, just visualize. Kahan se aayega? Don't bother. It is just coming. Just visualize. If you are giving the now healing to that person, you have to hold the person's ears like this. Okay, so after visualizing that you are receiving the cosmic energy, just place the hand over the ears of the person.
Okay, on the next step. Then again join the hands to the prayer mudra and chant the Dhanvantri mantra. Chant the Dhanvantri mantra, which we have already learned. Anybody who still don't know the mantra, सबको पता है ना? ठीक है, आप इसके syllables को check कीजिए and make sure you are spelling it completely right. Syllables, get the syllables, find out the syllables, and if you have any questions, you can ask. Now, after the prayer, place the hands on their head like this. Okay, generally, when you're keeping the hand, the finger will go down. Okay, so you're holding the hand like this. Okay, so the hand will be placed like this. Okay, so you're holding the first head, so you'll be holding like this. Or like, if the person is actually sleeping condition, then you have to hold like this. If the person now sitting position, you can hold like this as well. Okay, then you can ask them to lie down. And start with always the Tilak Kalaman. Start the stimulation with the Tilak Kalaman. Then Brahma Marma and then Adhipati Marma. This is the first three marmas which you have to stimulate. After that, you go for the Nari rectification and Vayu rectification. And then first local points or the points, local and distal points, right? Local and distal points, whichever is needed based on the situation. If those points are not included in the protocols which you have been already using. Yeah. Now, once the protocols are over, if you finish, say now, the protocols, the Naris and the Vayus and a few other protocols, it may take, say, every point will take around 30 seconds to 1 minute. So if you choose even 30 points, it is gonna go 30 minutes very easily, right? So आपको बहुत fast भी नहीं करना है, बहुत slow भी नहीं करना है. And if the protocols are short, maybe you can finish it within less than 15-20 minutes also. Then go for, if it is happening, once you start practicing, obviously it will get faster. Okay, once you keep remembering and there is no need to remember, then it will get faster. Then do it for maximum 3 rounds at once, 3 sets at once. Initially start with 1. Then once you start remembering the points and you're very thorough with the points, go for maximum 3 rounds, 3 sets. Okay, and then stop. After stopping, give the stimulation to Putri Marma and ask them how they are feeling. Putri Marma. Then slowly, very gently, if they are sleeping, let them sleep. If they are fine and then they can get up, ask them to get up and do a gentle namaskara again. And at that point, you have to again visualize that you're cutting the cord and do any chanting of the mantra which you like, or Sarve Bhavantu Sukhina, which we say, okay? Or Asatoma Sadgamaya. Any closing mantras you can chant to close the session. Even during the practice, you can still chant the Dhanvantri mantra with every single point. That is also your choice. With every single, and that will do
so much better. Or even if you are not feeling that much of focused, like whatever it could be the reason, just go for Om. That is simple. Or any other healing mantras which you got from your gurus. You can do anything which you believe is important, what you believe, with what you have mastered. Anything will work. So this is a whole complete session look like. Now I'm really expecting that all of you at least make these 8 videos. Then the cold cough and knee pain. And if you complete everybody completes this, then I can probably get you some more protocols. But only when you finish this. And this is very important. If you are willing to appear for the exam certifications, because this will be checked later. Because all this effort which I'm putting, the agencies, they will check what are the what everybody has gone through, what the level of practice they have done. Everybody, that has to be checked before providing certifications. Okay, for the good marks, this is important. So आप लोग हमारे पास सारे videos होना चाहिए, and when they ask, I have to be able to submit it. Clear? So good, give your good effort, make the videos nicely, and share before the end of the month. This is what I have to say. तो आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो. आप लोग देखो कि आपके पास जो भी आता है, whoever is coming to you, ask this questions कि आपको जैसे क्या क्या प्रॉब्लम है, what kind of health issues generally do you feel, and I'll tell them that we are learning about the marmas, and this is how this work, this is energy healing, this is healing with the medicine, and very gently try to convince them कि would you like to take a session and see how does it make you feel. If you are not a professional till now, if you're a professional and you are already practicing, what you can do is you can ask, say you can fix a particular 2-3 hours in a whole week. 2-3 hours in the whole week. Say that in that 2-3 hours, whoever will come to me, I will give them free Marma therapy classes. Okay, that way you will get n number of people who will be coming to you. You will get people. Are you guys there? Hello? Hello? मैं थोड़ा सा I'm asking, anyone knows why Kutri Marma at the end of the session? Why only Kutri Marma at the end of session? Kutri Marma, okay, let me finish this. Kutri Marma, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सेशन के टाइम में अगर किसी को डिजीनेस आ रहा है या तो कोई भी, इट्स लाइक ए इमरजेंसी पॉइंट, इट वर्क्स लाइक ए इमरजेंसी पॉइंट. तो आपको अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दैट विल बी रेक्टिफाइड थ्रू द Kutri Marma. ठीक है, if something goes imbalanced, okay, so with the Kutri Marma we can balance this. Now, as I said, fix a particular period. You will get some people to practice. Okay, this will enhance your credibility. Something will like professionally you will be known, obviously, and this will boost up your work as well. Like people will know for your service to the society. So that is also very important. So हमें बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है. Like first, obviously, it is the practice. We want the practice. We make sure that these are 100 people. Like target, like I have to finish at least 100 people in next 3-4 months. Giving treatment, and then you will see a pattern, like what is happening, what is not happening, and where I can do better. So many things will come to your mind. So many things will come to your mind. तो आप लोग शुरू कीजिए ऐसे, और like if something goes wrong, you will know what is going wrong. You will have the idea. Somebody now, what they did, one of my student from the previous batch, she tried all the nadis at once on her husband, all the 3 nadis, and her husband started
नो स्टमक क्रैम्प फॉर द नेक्स्ट 2 days. ओके, स्टमक क्रैम्प होना शुरू हो गया, तो पैर में वो पेट में जो मरोड़ आता है ना, समथिंग इज हैपनिंग. तो ऐसा नहीं कि आप तीनों चीज एक साथ कर दो, ठीक है, इन द बिगिनिंग. तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करना है, प्रॉपर लाइक सी what could be helpful, and just dedicate 2-3 hours in your for the whole week for the practice, and see how many people you're getting, and then when you will get some feedbacks, post them in the in the your social media, and see if more people are coming into this. ओके, ऑब्वियसली देखो ये आपको सेल्समैन भी थोड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है ना, और थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि आपको हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू कन्विंस पीपल. इनिशियल few years are so difficult, initial few years when you do this kind of things, and especially your family are the one who will not believe you in the beginning. Say, how this is possible, right? So आपको इन चीजों से जाना है, and you know that when you go through all this, then only you become stronger, and conviction will come, more stronger conviction will come, right? So yes, so now our course is complete. Now first of all, I really want all of you to all of you to say that thank you very much to stay up till here. It was not easy, so many difficulties, especially the language part and the delivery. Initially I have, obviously we all noticed that we needed the what do you call it, the screenshots, whatever, and I still kept my mouth shut because I want all of you to struggle a little bit, not getting everything so easily. I could have given everything, I still could make the notes and make the course very, very easy, but I'm still feeling like it is not going to help people. Okay, it is not going to help. So what will help, I feel I should do that and see, and then probably take a decision based on that. Okay, so this is my 4th batch online. Based on whatever I'm learning, I'm trying to do more better things in the next batch. तो आप लोगों को जैसे मैंने 15 दिन में सिखा दिया, अभी मैंने सोचा है कि like I will do just 1 class in a week and ask everybody to practice for the next whole week. Okay, and then when they are ready, we'll go for the next class. So one step at a time, so that nobody feels like it is missing or whatever it is. We have to see. I am experimenting. So I want now all of your feedbacks in a small video about who are you, what you are doing, and like how this course has helped you a little bit to understand what you have explored till now, and if it has helped you in any way, share it. And this could be very helpful for the people who are coming next. Okay, coming next, it is very important. See, this course, this knowledge has to be spread. Okay, and I'm making sure that there is no very less barrier, because once you know, the other people will know. There will be more research, more awareness which is coming, and it will help overall the society, right? तो आप लोग, आपका फीडबैक इस पे बहुत काम करेगा, आपका जो enthusiasm है, ठीक है, कि what you have learned, by only because these ads, how many people will see, but when you say something, when the people make a voice, that is heard by everyone. Okay, so आप लोग कुछ 1-2 मिनट का छोटा छोटा वीडियोस बना के आप थोड़ा शेयर कीजिए. ऑनलाइन का क्लासेस का यही फॉर्मेट है, बिकॉज वी हैव मेनी रेस्ट्रिक्शंस, एंड टू कम आउट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस वी नीड टू डू फ्यू एक्टिविटीज. ओके, सादिका जी आपको कुछ बोलना है अभी, और एनीथिंग और? एक रिक्वेस्ट. हाँ जी, उसके बाद मित्र जी आप उसके बाद बताइएगा, ठीक है? ओके सर. ओके सर. आप वॉइस नहीं आ रहा है सादिका जी, बहुत सादिका जी अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, प्रोटोकॉल सेट हम 3 टाइम्स दे सकते हैं, जो भी हमारा प्रोटोकॉल है. तो क्या ये डिजीज के ऊपर डिपेंड करेगा 3 टाइम्स देना, या कि हम दे ही सकते हैं, चाहे वो माइनर डिजीज है या मेजर है या जो भी है? मेजर माइनर मतलब उतना सोचने के लिए आप मतलब मत सोचिए, आप जस्ट देखो. हमें 3 टाइम्स कब देना है वो पूरा प्रोटोकॉल? कोई ऐसा नहीं, मतलब आप कुछ देखकर ही 3 देंगे हम 3 सेट्स टाइम्स? इन वन प्रैक्टिस. देखो आपके पास हाँ, बहुत ज्यादा 3 टाइम सेट्स. नहीं होगा, ठीक है. इफ somebody is at your home,
and they are with you, then you can probably do this practice for three times in a day. Okay. But how it is possible that if somebody is coming from outside, they will not come to you for three times in a day. No patient will come to you, and you don't have that much of time also to do it. You will get probably 130 minutes with one patient in the whole day. Okay, it is not possible to do this. So आप एक सेशन में एक इंसान के ऊपर 3 times maximum कर सकते हो, and leave them for some time. Okay, and see in a week day, what time. in a day, one in one session, maximum 3 sets. One time, one session. Three One sets, time, one session. Then next. 3 sets Sorry. in one session. अभी नहीं किया. 3 sets in one Okay. session maximum. Okay, Maximum. 3 sets, maximum 3 sets in one session. Okay, मिथुंजय जी आप बताइए. गलत मत समझना सर. हाँ. हेलो. हाँ जी बताइए. सर थोड़ा थोड़ा स्पीड कम कीजिए सर आपका नेक्स्ट क्लासेस में. मेरा स्पीड आप स्पीड. बोलते अच्छे हो, हाँ. रिपीट करने में हमको अंडरस्टैंड आएगा, ओके. लेकिन वही क्लास रिपीट कर रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना सर, हम उस टाइम के पे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन आप लाइव में बोलते रहते हो ना सर, स्पीड तो हो बहुत जाता है, फास्ट मैं थोड़ा बोलता हूँ. गलत हाँ. मत समझिए. हाँ मुझे speed लग देखिए रहा सर. था कि मैं बहुत शायद स्लो बोल रहा हूँ. आई डोंट नो. नहीं नहीं सर बाकी किसी को भी नहीं लगता है कि नहीं बहुत फास्ट. it नहीं, it is a right speed, I would say. Right speed. पता नहीं शायद अभी. मृत्युंजय जी. हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बोलिए. बैरियर तो है ही, थोड़ा इशू है. वो लैंग्वेज और ट्यून आपका थोड़ा ये होता है ना सर, वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा थोड़ा हाँ. स्पीड, हाँ. इतना भी नहीं है सर. आप 1 आवर सेशन में सब कुछ बता देंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड कम हुआ तो फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा बोल के बोले सर. नहीं और देखिए, कुछ लास्ट क्लास में, लास्ट बैचेस में, ठीक है, हमने पूरा हाँ सर. कोर्स 3 मंथ्स का रखा था. 3 मंथ्स. ओके 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 ओके, 3 मंथ्स. ओके सर. एंड मतलब मुझे लगा कि वो एक रीजन था कि मैक्सिमम पीपल ड्रॉप, बिकॉज सबको 3 मंथ्स का मतलब पेशेंस भी नहीं है. देखो ये कोर्स भी हमें 15 डेज में खत्म करना था, बट हम लोग अभी कितना अक्टूबर से शुरू किया था हमने, नवंबर दिसंबर में है. नवंबर से सर, नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया था. हाँ नवंबर फर्स्ट. हाँ, सो लाइक, हाँ, तो 15 डेज में खत्म करना था, तो हमें 45 डेज हो गया है. ओके सर. है ना. तो स्लो तो काफी स्लो चला है, मुझे भी लगता है कि यार ठीक है. तो ये भी देखिए 45 डेज इंस्टेड ऑफ 15 डेज, मतलब 2 वीक में खत्म करना था, हमें ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो चुके हैं. तो फास्ट तो है, ठीक है, फास्ट तो ऑब्वियसली है, लेकिन ब्रेक बीच में भी फिर भी हमने बहुत सारा ब्रेक्स दिया है. ब्रेक्स दिया सर, ब्रेक्स हाँ, दिया, वो हेल्प ब्रेक्स हुआ. तो काफी दिया है. दिया है. तो है कुछ, मतलब 100% परफेक्शन तो मतलब कहाँ, मतलब हर चीज मैंने नहीं ट्राई नहीं किया है. हाँ, नहीं मैंने सर, हर वैसा चीज. नहीं बोल रहा हूँ. आपको हाँ. टाइम दिया है वो बात नहीं बोल रहा हूँ सर. बोलते रहते हो ना आप, स्पीच कर अभी एक्सप्लेन करते रहते हैं ना, उस टाइम का स्पीड थोड़ा अच्छा अच्छा, उस टाइम के पर्टिकुलर थोड़ा टाइम. कम. उस टाइम हाँ. का बोल रहा हूँ सर. हाँ हाँ, पर्टिकुलर टाइम वो पे पीरियड का स्टार्ट सेशन मोर कम किया, वो वीकेंड बैचेस. उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ सर. हाँ देखिए, अभी तो वो वीकेंड का भी थोड़ा एक, थोड़ा बोलने वीकेंड के का भी. हाँ, मैं बोल रहा था वीकेंड का भी एक इशू हाँ है. वो. ठीक है, वीकेंड में हाँ सर. सादिका जी क्या होता है कि मुझे अभी ना, अभी स्पेशली मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों को कुछ दिन पहले. मेरा क्लिनिक जो है वो अभी न्यूज में है, लोकल न्यूज चैनल में आया है. मैंने शायद लास्ट 4 डेज में आई हैव रिसीव्ड मोर देन 400 कॉल्स. 400. Okay, 400 calls. That video has gone viral. Like I think 1,70,000 or 80,000 people have watched it already. 1,70,000 people. So like the call is coming from the whole state, and I'm now at this moment I am like treating almost 20 people in a day. So my mom was shocked firstly because I used to eat my lunch at 12 o'clock. Now I'm not coming to for lunch for 3 o'clock also. तो मेरी मॉम की इसको क्या हो गया, जो 12 बजे इसको मतलब दिमाग खराब हो जाता था लंच के लिए, वो 3 बजे भी लंच के लिए नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये ना सिचुएशन अभी ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि ये रात का बैच भी मतलब कब तक चला पाऊंगा. आई एम लाइक रियली नॉट श्योर, बिकॉज इट्स गोइंग आउट ऑफ द हैंड नाउ, एज ऑफ नाउ. तो इसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था कि ये लाइक this has been like last 7-8 years of preparation to when somebody will come and ask me
about yoga or any kind of healing, I should be very much prepared to give them results and be, be clear with what should I say. So now I got a chance. I somehow I felt if I go back from Bangalore to my hometown, maybe I'll get something was happening. Something was hitting my mind. Maybe I'll get some attention, because this is not just for because of me. If the energy healing system or the alternative healing medicine system comes into rise, I think so much good will happen. Okay, so much good will happen to the whole world. People are fed up with the medicines. So I'm in a war with the medicines as of now, you can say. Like, I want people to stop medicine and get into good health, health system. तो आप लोग ऐसे एक बड़ा पर्पस रखिए अपने मन में, बिग पर्पस, दैट यू रियली वांट टू मेक सम बिग चेंजेस, तभी आपको वो एनर्जी भी मिलेगा कि आप कर पाए. तो वीकेंड का नहीं, इसलिए शायद मैं अभी डाउट में हूँ, क्योंकि एक दिन तो शायद मुझे चाहिए होगा रेस्ट के लिए, कि एक दिन में मेरा हालत खराब हो जाता है ना. तो देखेंगे क्या होता है आगे जाके. हाँ आप नेक्स्ट और कौन सा भी कोर्सेज करना है तो सर इंटीमेट कीजिए, हम लोग हाँ मैं तो हाँ ज्वाइन होऊंगा. हाँ हाँ. तो अभी कपिंग का प्लान है, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर का भी प्लान है आगे जाके. लेकिन शायद 1-2 महीना अभी देखेंगे, थोड़ा सा 1-2 महीना थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे. एंड मुझे एक चीज सबसे बुरा लगता है कि लाइक आप लोग जो सीखो उसको प्रैक्टिस इमीडिएटली स्टार्ट करना शुरू करो. मतलब सोचो मत, जस्ट गो एंड अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज फर्स्ट डे, मेरे टीचर ने, आई वाज वेरी स्कर्ड ऑफ द नीडल्स. सिर्फ एक नीडल लगा दिया उन्होंने, एक नीडल. ठीक है, उसके बाद से मैंने एक हर दिन, पता नहीं, आई हैव put how many needles on my body. I am like non-stop every single day. I never stopped after that. Now I think in the last I think last 2-3 years, I have till now I have had a count. I think I have put almost 1 lakh needles already finished. 1 lakh needles I have put already. ठीक है, तो वो एक दिन का, वो पहला दिन का जो डर था वो मेरे मन में अभी भी है, कि लाइक हाउ स्कैर्ड आई वाज. एंड टुडे जस्ट इन few 2-3 years 1 lakh needles are over. ओके, तो आप लोग जस्ट शुरू करो एंड इट विल हैपन. ठीक है, और एक्सप्लोर करो other things and keep seeing what other possibilities are there. मर्मा में आप लोगों को रिसर्च और ज्यादा जरूरी. ठीक है, find out in your areas, in your places, if there are more people who know about the Marma, what they are teaching, what their methodology, and आप लोग बहुत ज्यादा मिक्सअप करोगे तो सब. अभी देखो, बहुत लोग जो जानते थे मर्मा के बारे में, they were not able to learn this system because this was very different from the Ayurved system. तो वो मैसअप भी मत करना है. पहले ये जो पॉइंट्स है उसको पूरा 100% अपने दिमाग में डाल दो. उसके बाद अदर, क्योंकि देयर आर, अकॉर्डिंग टू माय टीचर, ही सेड देयर आर 8000 पॉइंट्स. टेल मी 8000 points, how will you learn that much? 8000 points of 8000 Marma points. Now you tell me how we're going to learn it. तो हमने 200 भी सीख लिए, लाइक 100 काफी, और उससे भी ज्यादा. सिर्फ ये नारी एंड बायो, बस दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. आप लोग इतना सीखो. प्लीज शेयर द वीडियोस, प्लीज शेयर योर फीडबैक्स. ये बहुत जरूरी है. आपके फीडबैक के ऊपर ही, मतलब ये कोर्स कितना स्प्रेड होगा और कितना लोगों इसके बारे में जान पाएंगे, वो डिपेंड करता है ना. सो यस. So what is the best therapy, other therapy with this Marma points? कौन सी ऐसी थेरेपी है जो हम यूज कर सकते हैं मर्मा के साथ बेस्ट? तो मर्मा के साथ आपको जो आयुर्वेद ही है वो ही सबसे ज्यादा सूटेबल है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात पे दोष, इन सब का कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो इन सब चीजों में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा. जो सर्जन्स है एंड फॉर देम, okay, it is very essential to know the Marma points, because if somebody is got hurt in a particular Marma point, he has to be very sure that he doesn't hurt or damage the Marma points. तो उनको Marma points जानना बहुत जरूरी है. तो जैसे आप नेचुरल हीलिंग कोई भी प्रोसेस ले, ठीक है,
जो आपको हमेशा याद रखना है कि एक पर्सन जब कोई भी मर्म हीलिंग ऐसे लेने आता है, उसका स्टमक जो है, उसका स्टमक को क्लीन करने के लिए आप सारा पहले तो ध्यान दो उनके ऊपर, ठीक है, कि उनका स्टमक क्लीन होना चाहिए, ठीक है, जो शंख प्रक्षालन जैसे दिया है। फिर नेवल नेवल सेटिंग, नेवल सेटिंग करना आना चाहिए सब। everybody should be everybody should be able to do what is navel setting. navel setting आप लोग का सीखो कैसे किया जाता है, ठीक है, और what is navel setting ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको, रिजल्ट्स और भी काफी अच्छा आएंगे, ठीक है। एंड बेसिक एक्यूप्रेशर आपको हेल्प होता है काफी ज्यादा, तो वो थोड़ा उसमें भी आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो। बट एक्यूप्रेशर में जैसे ये जो फंडामेंटल है ना, कि ये पॉइंट दबाओगे तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ये करो तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखना कि डायग्नोसिस इज द क्योर, द रियल डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस सही है तो कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, नहीं तो ये देखो ऐसे तो हर चीज ठीक हो जाता है, लेकिन है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स ठीक नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलो हम विल स्टॉप इट हियर एंड आई विल कीप वेटिंग फॉर योर प्रैक्टिसेस। हाँ, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और भी? हाँ सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ये अमेजोन पे ना कुछ वुडन स्टिक्स आती है एक्यूप्रेशर के लिए, तो डू यू थिंक वी शुड No, यूज दैट और जस्ट no, हैंड्स? no, these are really- आप अगर सिर्फ एक्यूप्रेशर मतलब जस्ट फॉर फन, you're sitting and doing things, मतलब हेल्पफुल, बट उतना भी बहुत ज्यादा मिरेकलस नहीं है, मतलब दिस विल, मतलब आप जो सीख रहे हैं उनके कंपैरिजन में दिस इज तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। है ना। तो आप बेसिक कुछ चीजें आप जैसे देखो, आपको सर स्पाइन का अलाइनमेंट करना आना चाहिए कि आपका स्पाइन अलाइनमेंट, आपका स्पाइन में अगर पेन है कहीं पे तो आप उस पर ध्यान दो, स्टमक पे कहीं पे प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दो, ठीक है, ओवरवेट है उस पर ध्यान दो, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, इन चीजों पे ध्यान दो। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ठीक रहने के बाद आप दूसरी चीजों पे एडवांस लेवल की चीजों को ठीक कर सकते हैं ना। और एनीबॉडी, दीपक जी यू वांट टू से समथिंग, आप कुछ बोलना सर, चाहते हैं? मैंने मेरे सर्वाइकल के ऊपर बहुत सारा आपका और मैं एरिकुलर थेरेपी भी थोड़ा बहुत सीखा था। बाद में मर्म चिकित्सा जो आपने सिखा दिया उसके ऊपर भी मेरे को हेल्प हुआ। अभी मैं रिसेंटली 4 days back I went to Mumbai. So there also one of and is having चल रहा था, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा ये कर दिया। और मैं उसके बाद मैं सूरत चला गया, उधर स्नीजिंग एलर्जिक इश्यू बहुत था, वो एक लेडी को, मेरे दोस्त के बीबी को, तो उसके ऊपर भी अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। तो उनके भी थोड़ा पॉइंट सिखा के आ गया, सो दैट वो भी, क्योंकि मैं रेगुलर तो नहीं रहूंगा ना उधर, तो अभी उसने भी थोड़ा बहुत ये कर दिया, तो अभी वो बोलते चलो बहुत अच्छा लगा है, अच्छा दैट्स वेरी नाइस, फीलिंग बहुत अच्छा, हो रहा है। परफेक्ट। सो मैं भी अपने इधर भी थेरेपी के बारे में भी उनको भी समझा देता हूँ, तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, मैंने अभी हाल ही में 4 महीने पहले एक सोरासिस 100% क्योर किया, 8 साल का सोरासिस था, तो अच्छे रिजल्ट। मर्मा चिकित्सा उसमें मेरे को बहुत हेल्पफुल है सर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच। या आई सेंड। थैंक यू वेरी मच महाजन थैंक सर। थैंक यू। वेलकम। और कोई आज और है? मोरन सर नहीं है, मॉर्गन। हाँ, आई थिंक सर मैं बोलना चाहूंगा आपके कोर्स के बारे में। हाँ, बहुत ही आपने अच्छा तरीके से डिलीवर किया, और आपका कंसर्न जो है कि वी शुड मास्टर दिस टेक्निक्स एंड दिस थेरेपी, वो बहुत ही जेन्युइन है, और बहुत ही मतलब इनोसेंस से, मतलब योर कंसर्न इज देयर बट स्टिल यू आर सो इनोसेंट टू डिलीवर इट
so genuinely. Thank you so much. Thank you. And we are always be grateful for you for this. तो ये देख, हम जैसे मैं भी एक्यूपंक्चर काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, बट मुझे लगा कि बीइंग ए योगा टीचर और बीइंग फ्रॉम इंडिया, वी शुड डेफिनेटली वर्क ऑन दिस सिस्टम, बिकॉज what do you say, obviously acupuncture has a this image of being Chinese or whatever, like, है ना, तो ये चीज तो है, ठीक है, आप जो भी, दो इट इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन सिस्टम ऑनली, तो भी लोग इनिशियली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो इंडियन रूट्स है उनको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि रूट्स में ही सारा पावर होता है। और आई एम नॉट श्योर हाउ परफेक्ट, मतलब एक्यूपंक्चर अभी भी लगता है कि थोड़ा, मतलब क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे रिसर्च हुआ है और 5000 सालों का हिस्ट्री इस पे मतलब है, और हमारा हिस्ट्री तो हमें, मतलब वी हैव लॉस्ट दैट हिस्ट्री फ्रॉम द नालंदा, वो नालंदा के साथ सारा कुछ खत्म हो चुका था। तो हमारे पास जितना है हमें उन पे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, रिजल्ट मिले या ना मिले तो इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो देखेंगे क्या होता है और कितना आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा कोशिश तो रहेगा कि एटलीस्ट 10-15 हजार लोगों को सिखा दे, बट गॉड नोज मतलब क्या होता है ऐसे आगे जाके। आप लोग भी All the इसको best. आगे, Prayers and हाँ, best wishes to for your mission, sir. Best wishes Thank for you. your mission. थैंक यू, ग्रेट। सो और इतना लो कॉस्ट में कोई नहीं पढ़ाता सर, तो आप इतना पढ़ाया हम लोगों के लिए, हाँ, इसीलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू और धन्यवाद। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।